अब हम शेड करेंगे फ्रंट व्यू ऑफ द नोज। इसमें भी आप पहले ये जो अपर लाइन्स हैं इसमें थोड़ी सी शेड फिल कर लेंगे बोथ साइड। सो दैट कि आपको नोज की फ्रंट लाइन प्रॉपर्ली विजिबल हो जाए। ये यहाँ से थोड़ा सा राउंड अप हो गए इस राउंड के साथ जो हमने मिडल बिग सर्कल लगाया था और उसके साथ मर्ज हो जाएगी। थोड़ा सा शेड यहाँ पे देंगे हम और हम क्या करेंगे इस सेंटर लाइन को रिमूव कर लेंगे यहाँ से। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। जितनी भी गाइडलाइंस है बिफोर शेडिंग यू गाइस कैन रिमूव। Same like in the previous nose, you can blend it with your blending brush. बाकी शेड जो हो सकता है वो आप हमें ब्लेंडिंग टूल से देंगे। आप इस एरिया को इस फ्लैट पोर्शन से ब्लेंड करेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं कि ब्लेंडिंग कैसे हो रही है। आपका ये पोर्शन हाईलाइटेड रहेगा ये दोनों साइड। बोथ साइड आप थोड़ा सी डार्कनेस देंगे। और ब्लेंडिंग टूल से ब्लेंड करेंगे। पूरा ऊपर तक ले जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब कंप्लीटली इन दोनों को ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। सेम लाइक राइट साइड ऑल्सो। अभी नोस्ट्रल्स ज़्यादा डार्क करेंगे सो दैट नोज प्रॉपर विजिबल हो।
इस तरह से। आप इसे राउंड मूव करते हुए जस्ट शेड कर सकते हैं। इरेजर से आप हाईलाइट्स दे सकते हैं। हाईलाइट भी प्रॉपर एक शेप में देंगे हम। आप जब रिमूव भी करेंगे तब भी आप अपनी इरेजर को राउंड ही मूव करेंगे, सो दैट कि उसमें एजेस हैं जो उनसे इतने शार्प ना हो जाएं कि वो बहुत ऑड लगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और ये पोर्शन में थोड़ा सा राउंड रिमूव कर दूंगा। ये देखिए कुछ इस ढंग से। आप इस लाइन को शार्प कर देंगे थोड़ा सा। बोथ साइड। अपने ब्लेंडेड ब्रश के साथ मैं थोड़ी सी सॉफ्टनेस दे दूंगा। जितनी भी हार्डनेस है इसमें से रिमूव हो जाएगी वो। अपर एरिया ऑफ दिस नोज I'll give little bit darkness on both side. आप देखिए ये आपका फ्रंट नोज भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। पेंसिल से ही आप थोड़ा सा शेड दे सकते हैं।
सो सी आप देख सकते हैं कि आपका फ्रंट नोज भी रेडी हो चुका है। इस आउटर शेड को थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए सो दैट कि इस पे थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाए। लीजिए, शार्प लाइन को भी थोड़ा ब्लेंड कर दीजिए। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि आपको ये डोज कैसे ड्रॉ करने हैं और कैसे शेड करने हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग योर सपोर्ट।